and welcome to The Pulse, the show where we talk about issues concerning us, the people. I'm Tina Jha. 4th of February marked World Cancer Day. Every year, the day is observed worldwide to raise awareness about cancer and work to make it a global health priority, as cancer today is the second leading cause of death globally. According to the World Health Organization, 1 in 6 deaths across the world is due to cancer. Approximately 70% of deaths from cancer occur in low and middle income countries. India had an estimated 1.16 million new cancer cases in the year 2018. 7,84,800 cancer deaths and 2.26 million 5-year prevalent cases in a population of 1.35 billion. Now, the rate at which cancer cases are rising in the country, the WHO warns 1 in every 10 Indians will develop cancer during their lifetime and 1 in every 15 will die of the disease. Breast cancer, oral cancer, cervical cancer, lung cancer, stomach cancer and colorectal cancer are the most common types of cancer in India today, accounting for nearly 50% of all new cancer cases in the country. On this edition of The Pulse, we'll talk about India's growing cancer burden, the factors leading to such an alarming increase in cancer cases, and what can be done to prevent and control the disease. Joining me on the show today are Dr. Sushma Bhatnagar. She's Professor and Head, Department of Pain and Palliative Medicine, Institute of Rotary Cancer Hospital, All India Institute of Medical Sciences. Next to her is Dr. Sunil Khetrapal. He is Chief Transformation Officer, Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Centre, Delhi. He's also heading the Department of Preventive and Palliative Care. We also have with us C. Rekha Golabani, Director Resource, Indian Cancer Society. And next to her is Dr. Ajay Gogia. He's Associate Professor, Breast Cancer, Department of Medical Oncology, All India Institute of Medical Sciences. I welcome all you distinguished panelists on this edition of The Pulse. And besides, we also have with us on the show today cancer survivors who will discuss, in fact, they will share their stories with us on the show, how they beat the disease and came out strong of it. So thank you to all of you as well for joining us on this edition of The Pulse. Dr. Sushma Bhatnagar, if I could begin the program today with you. Alarming increase in cancer incidence in the country. But according to you, what are the main reasons which are leading to such rising numbers of cancer in India? I think the main reason is lack of preventive strategies. The cancer screening program should be now, we should strengthen our cancer screening program so that we can tap them on an early stage. Mm-hmm. And then second thing that we should have a good preventive strategies. Third thing which is important is lack of awareness and lack of hygiene. So that is also another leading cause of increasing this thing. Like cancer cervix, we can easily prevent and we can easily stop at the early by giving vaccines and all. But because people don't know, that's why they don't use it. And similarly, cancer breast, in case if it happens, we can in the early stage we can pick them up and they are completely curable, but we don't do this. Our patient, they present in a very, very advanced stage. So I think lack of awareness, lack of screening facility and preventive strategy, that is the reason that it is increasing so alarming. Okay. Dr. Khetrapal, obviously early detection and lack of awareness are two major reasons why, cancer patients in India, I think the number of patients who are dying of cancer is increasing. But what are the factors which are leading to cancer in the first place? See, as Dr. Bhatnagar has very rightly mentioned that we need to have a preventive strategy. So, preventive strategy also needs a very collaborative and, the community approach, so that you join hands with the community, with the individuals, with the various organizations, NGOs. And the problem, when we go for the camps, screening camps, what we face is that people, don't want to come out for this cancer screening. They take it as a myth. They are scared of, such activity. Like they think that cancer is a communicable disease. And motivating people, encouraging people, educating people is a big challenge.
And the reasons for cancer, as you have just asked, is, we are all, it's the behavioral aspects, like your, the lifestyle issues. Lifestyle modification is plays a very important role. The tobacco chewing, if you see, if 10 million people, they die of cancer every year globally, nearly 2.5 million die of this because of smoking. So smoking, tobacco chewing, and tobacco in any form is harmful. The problem is, in our country, people are, they are totally unaware of such thing, that, the consequences, the impact of this tobacco chewing. So I think there are various other reasons, lifestyle modifications. When we see the lifestyle and behavioral changes, like this tobacco chewing, the alcohol, your diet. So these are the main factors actually. And of course, the genetics also play a role in causing cancer. Okay. So I'll bring that question to you, because now obviously there are also cases where the family doesn't have a history of having cancer, but there are patients who are emerging out of cancer. I'll bring that question to you. But Mr. Gogia, breast cancer today is the most common type of cancer in India. We are seeing more and more women, being detected of breast cancer. What women today in India are lacking is they don't want to go for screening. Or he also pointed out changes in behavioral lifestyle of people. Is that also to blame when it comes to breast cancer among women? If you see, the most three common cancer in India is breast cancer, oral cancer, and cervical cancer. So breast cancer is mostly because of the disease of higher socioeconomic status. And because of the lack of activity, daily activity, lifestyle changes in the form of junk food, lack of activity, smoking and alcohol, this will lead to increased incidence of breast cancer. And second, again, the awareness and screening program is not very effective in India. So this might be lead to more breast cancer incidence and late detection. Second, oral cavity. The second most common cancer is oral cavity, and oral cavity is 90% associated with smoking and alcohol. So more the smoking, more the alcohol, the incidence is increasing. And third is the cervical cancer is usually associated with human papilloma virus. Is preventable, and most of the times is associated with HPV infection. So lifestyle changes, alcohol, obesity, junk foods, infection in the form of HPV and tobacco and alcohol. This might be lead of the most common risk factor for cancer and increased incidence in India. Okay. Rekha Gurbani, you are a cancer survivor yourself. Yes. You work with hundreds of cancer survivors. Yes. Dr. Khetrapal pointed out that, women even today are reluctant to go for screenings. Very true. Is that true? I mean, and if it is, very when you work with such women, how do you convince them to come out, raise awareness among them about screenings, and obviously because it leads to early detection? Yes. It's very true, as Dr. Khetrapal said, it is a work which should be done in collaboration with the society and the medical fraternity and all the stakeholders, And as a worker in an NGO, we have now started going to remote villages. Educated women, or I should say popularity, they come forward, they talk about cancer, but people living in remote villages, they are reluctant, and they are very superstitious. They feel if they hear the word cancer, they will get cancer. And most of the people feel it cannot happen to them. When we go to villages, people run away from us. We take our screening van with us. We try to convince them. But now we have started the idea, not talking about cancer at the first instance. We talk to them about just symptoms without telling this is a symptom of cancer. We say if this happens to, we are talking about your health. If this happens to you, do you have this symptom? So some of the people come forward. Oh yes, I have got this symptom. I have got this symptom. So we catch hold of them. Then they get interested. Then we make it little personal. So how do you do your homework? How is household work? And how about the hygiene in your family? And what about the history of your family? And they are very happy to talk about their personal life and family life and all that. So gradually the things come up and they get convinced. And we had an experience when we go, there are only 15 to 20 people who are ready for screening. But by the end of the day, we have to work very hard on standing on the roadside, convincing them. There may be around 100, 120 people who come forward for screening. So we have to first start without talking about cancer, then gradually making them interested into it and making them health conscious.
And once they come out with the symptoms, it becomes easier for us to convince them. And I think awareness is a big part of it. So awareness should be amongst the healthy people, not people who are already sick with cancer. It should go to the healthy people so that before they get struck with cancer, they should know about cancer. So creating awareness is very, very important. And I would particularly want to say, Dr. said, cervical cancer is 100% preventable. So why not give it a form of a campaign with the help of government, making policies and taking the HPV injections to all the girls, young girls, teenagers. So, and educating women how Definitely. to lead their We'll life. talk about the preventive steps later on. Yeah. But what I wanted to understand from you in the first place is that you mentioned there are several challenges that you face. Yes, challenges. Where is the challenge bigger? In rural areas? And what are the kind of challenges? Because we would perceive educated women, it wouldn't be very difficult to convince them to go for screenings. But is there a challenge that you face even in cities? One challenge is the taboo about it, if you hear the word. Second is they are very afraid to lose their family and husband because they always fear if I get breast cancer, cervical cancer, my husband would not be interested in me. Third thing, they don't want to come out of their comfort zone because once if they feel if I'm sick, then I'll have to go to the hospital so many times, so why to get into the trouble? Then fourth is they are worried about the financial burden about it. Supposing I get this sickness, I will be asked to go to the hospital, spend all that money which I have saved for my daughter's wedding or my child's education. So all these factors are the barriers in the way of accepting the fact that they should go for this. So they try to run away from it. But we have to convince them that you have to face it today or tomorrow. So why not face it today? A stitch in time saves 9. So that is what where we have to handle them psychologically, keeping in our mind their cultural background, their social background, their economic background, their educational background, all these things. And I think at least nobody should die of cancer. That much we can achieve if all of us make an effort. Definitely. We're also being joined by some cancer survivors. I introduced them to you earlier on in the program. So let's hear it from them. How difficult was it for them to cope up with the problems, the responsibilities that they face, but in the end they managed it all and emerged stronger out of it. So let me start with the senior most member sitting in the front row. मेरा नाम प्रोमिला कत्याल है, मैं जलंधर से हूँ और 9th में 2012 को डिटेक्ट हुआ क्योंकि मैंने अपने को ही देखा कि थोड़ा सा लंप है मेरी ब्रेस्ट में, तो हाथ लगाया तो दर्द हुई, बिल्कुल छोटा सा था। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा डॉक्टर है, उसके पास मैंने जाके बोला कि मुझे तो मेमोग्राफी की ज़रूरत लगती है। फिर उसने डॉक्टर को कंसल्ट किया और मैंने चेकअप कराया, उसने बोल दिया कि हाँ आपको है। फिर मैं दिल्ली आ गई, यहाँ मेदांता हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज शुरू करवाया और उन्होंने बोला ठीक है आपका तो कीमो नहीं होगी, रेडिएशन से ही आपका हो जाएगा ठीक। मैं लकीली मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं बहुत धन्यवादी हूँ ईश्वर की कि उन्होंने मुझे जल्दी से पता मेरे को चल गया कि जल्दी पकड़ में आ गया। बिल्कुल, जैसा कि अभी पैनलिस्ट भी कह रहे थे, द मोमेंट यू हियर कैंसर, और स्पेशली हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, बहुत ही एक फियर फैक्टर होता है जो आपके अंदर होता है, बिकॉज ये होता है कि ओ माय गॉड अब मेरे पास कितना टाइम है, या कैंसर इज समथिंग दैट इज परसीव टू किल पीपल। तो ऐसे में आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, उनका सपोर्ट कैसा रहा? पहले तो मैंने ही अपना हौसला नहीं खोया, मैंने बोला कि मेरी बॉडी को ही कुछ हुआ है ना तो इसका इलाज है, ठीक हो जाएगा। बच्चे तो रोने लगे कि हो मम्मी को कैंसर हो गया, मैंने कहा इसमें क्या है, इलाज है, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप क्यों रोते हो? तो उन्होंने भी सारा टाइम मेरा हंस के ही गुजारा और मैंने भी उनके साथ हंस के ही गुजारा है। It's because of people like you who give out a very positive message that cancer is curable, you can emerge out of it. मैम आप अपने बारे में बताइए, when were you detected with cancer and what was the first reaction that you got from your family? मेरा नाम मंजू कत्याल है और मैं दिल्ली से हूँ और मेरे को दिसंबर 2013 में मेरे को हल्का हल्का सा बुखार होने लग गया था और मैं थक जाती थी और जनवरी में पता चला कि लंप है, तो दिखाया डॉक्टर को, तो उसने बोला कि आपको कैंसर है। तो
मेरे बेटे ने मेरा ब्रेन एकदम से वॉश कर दिया जब मेरे को डिटेक्ट हुआ कि मेरे को कैंसर है। वो कहते हैं कि माँ ये तेरी लड़ाई है, क्योंकि डॉक्टर इसको देख लेंगे, ट्रीटमेंट कर देंगे, पर ये देखना तुमने कि तुमने इसको लेना कैसे है, पॉजिटिव वे से कि नेगेटिव। हम लोग सब तो डॉक्टर के रूम के बाहर तुम्हें छोड़ देंगे, डॉक्टर भी तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देगा, पर अगर तुम पॉजिटिव लोगी तो डॉक्टर को भी पॉजिटिव इसकी आएगी एनर्जी, और तुम्हारा ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा रोई, पर मैंने अपने दिमाग का सारा कंप्यूटर बंद कर दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, इसमें सब नई फ्लॉपी डालेंगे, जो होगा उसको मैं अपने वे से लिखूंगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है, कुछ तो कैंसर होता है, कुछ लोग डरा देते हैं, हाय तुम्हें कैंसर हो गया। और मैं आपके माध्यम से यही बताऊंगी कि डरना नहीं चाहिए और लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बॉडी जो है वो अलग अलग रिएक्ट करती है। तो किस तरह की बातें लोग आपसे करते थे जिससे आपको लगता था कि जैसे मेरी कीमो जब हुई है तो मैं गई हूँ, तो वो कोई कह रहा था कि मेरे नेल नीले हो गए, देखो इनमें कैसे चेंज आ गया। तो जो दवाई होती है वो हर बॉडी पे अलग अलग रिएक्ट करती है। तो बाल उतरे, हाय लोग ये कहें हाय बाल उतर गए, और मैंने बड़ा खुश होके इसको लिया कि मैंने बचपन में कभी अपने बाल उतरे हुए नहीं देखे। चलो ये भी अच्छा हुआ कि मैंने देखा। और मैं मॉल में स्पेशली जाती थी बिना बाल के, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि लोग देखें और इससे इनकरेज हों कि अगर ये ऐसे घूम सकती है तो जिनको कैंसर है तो वो क्या हो गया, उसमें क्या हो गया भाई। इसमें मैंने देखा है कि अपना ना मेंटली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव हो तो आप हर चीज को पॉजिटिव वे से लोगे। I think it's as much of a mental, disease as much as it affects you physically. ये सारा मैंने देखा ब्रेन का ही खेल है। जिस दिन मैंने हॉस्पिटल एडमिट होना था तो उसी दिन मेरे बेटे के जो फादर इन लॉ है वो कहते नहीं आप हमारे घर में लंच करोगे। उनके घर लंच किया और वहाँ पर उन्होंने पार्लर वाली बुलाई हुई थी। मैं अच्छी तरह से वहाँ पर पार्लर में तैयार होके फिर मैं हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए गई। What a positive way to deal with it. मैम आप में से जैसे as she pointed out, physical appearance, I think all of us women are really concerned about the way we look. 5 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकलते हैं, we are all looking into the mirror. Are we dressed properly? Are we looking nice? Is our hair okay? So when you obviously know कि कैंसर ट्रीटमेंट इज नॉट समथिंग जो एक दिन में खत्म हो जाएगा, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो कभी ऐसा रहा when you were extremely worried about your physical appearance and then how did you नहीं ऐसे कभी नहीं, मेरे को तो कभी नहीं फीलिंग आई, ना ही मेरे घर वालों ने कभी ये फीलिंग आने दी। बल्कि जब मेरी रेडिएशन हुई तो मैं अपनी वो गई उसके पास, मैंने कहा कि मेरे को ना 6 कुर्तियाँ ना अच्छी सिल दे क्योंकि मैंने रेडिएशन के लिए जाना है। तो वो मेरे ऊपर से नीचे तक मुंह देखने लग गई कि ये कैसे बोल रही है। रिएक्शन एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। ट्रू, अच्छी तरह से लेना चाहिए। और मैं जिस दिन ये नहीं कि कीमो में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती थी, कीमो में 3-4 बार मैं इमरजेंसी में भी गई हूँ, पर जिस दिन मैं लो होती थी ना, मैं उस दिन इतनी अच्छी तरह से तैयार होती थी, फिर मैं अपने बेटे को कहती चले घूमने के लिए। ठीक है मैम, आप आई वांट टू टेक द सेम क्वेश्चन टू यू। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर ट्रीटमेंट वर यू एवर वरीड अबाउट फिजिकल अपीयरेंस, जिसने आपको थोड़ा सा कभी वीक कर दिया हो, कि आफ्टर कीमो हाउ विल आई लुक, हाउ व्हाट विल पीपल से? मेरा नाम आशा अग्रवाल है और मेरा एम्स से ट्रीटमेंट हुआ है। मेरे साथ ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ, बस एक बार मुझे लगा था कि मेरी सासू माँ ने मुझे बोला, चाची सासू माँ ने बोला कि आशा अब ना जल्दी से बच्चों की शादियाँ कर दे, पता नहीं टाइम का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे कैंसर हुआ, मुझे कभी ऐसे फीलिंग ही नहीं आई कि मैं मर जाऊंगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी। हाँ, जैसा मैम ने कहा कि लोगों के रिएक्शन से ज़्यादा घबराहट हो जाता है। बिल्कुल। और मुझे ऐसे लगता ही नहीं था कि कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है। सब मुझे पूछते थे कि क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कैंसर हुआ है और कुछ नहीं हुआ। कहते लेकिन आपको डर नहीं लगता? ना डरना क्या है। जो लोग मुझे हॉस्पिटल में मिलते थे जो डिप्रेशन में गए और ऐसा कुछ हुआ, तो उन लोगों को मैं उनके साथ बातें करती थी और उनको डिप्रेशन से मैंने निकाला है मेरे इलाज के टाइम में ही। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे कीमो चल रही है और
कीमो के टाइम में 2 दिन तो मैं ठीक हूँ, 3rd डे से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती थी और 4 दिन तक मैं ऐसे रहती थी जैसे बेहोश पड़ी हुई, जिंदा लाश की तरह। तो ऐसा मेरे साथ होता था, तो ऐसा लगता था कई बार कि मर जाए, तो फिर छत से कूद जाऊं। उस फीलिंग से फिर बाहर कैसे निकले? यू नो व्हाट गिव यू मेरी स्ट्रेंथ? मेरी बेटी जो मेरे साथ, जिसने मुझे केयर गिवर, जो मेरी बेटी थी छोटी, उसने मेरे साथ बैठ के ऐसे, मम्मा ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ये नहीं है, आप ठीक हो जाओगे ना, आप ही तो हमें बोलते हो कुछ नहीं हुआ है, ठीक हो जाएंगे, और आप अब ऐसे कर रहे हो, कुछ नहीं होता मम्मा, ठीक हो जाएगा। बताओ आपको क्या खाने का मन कर रहा है? कुछ मन कर रहा है गोलगप्पे खाने हैं, वो बना दूं आपके लिए, पाव भाजी बना दूं। That's why they say, you know, that in such testing times, family support is, I think, the most crucial thing. Sushma Bhatnagar, when we talk about cancer patients, another very, very important thing attached to them is palliative care. So what are the strategies that you adopt apart from the physical battle that they are dealing with, that they are mentally and emotionally also, you know, it helps them come out of it? So, कैंसर की जो वेरियस स्टेज होती हैं वो ये है, पहली स्टेज होती है क्योर। जब क्योर हो गया तो ठीक है, बट इफ़ क्योर इज़ नॉट पॉसिबल देन सेकेंड स्टेज आती है कंट्रोल। सो ऑल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑल फिजिशियंस, दे ट्राई टू कंट्रोल द डिजीज, control, and there is third C is comfort. Control and comfort goes together, because when we are controlling the disease, we are going to give some medications, so person will have some side effects. So there should be somebody to comfort. Comfort means, comfort is not only physical, it is not only that vomiting ho raha hai or something. Every patient they are very brave. I don't think that villagers or a educated person, there is no difference. It is doctor who makes the difference. If doctor will make them understand that what is happening to them, they understand it very well. They are very brave. Only thing, we have to give them a right information. Right information, as soon as we will give the right information, they will start thinking that this is my baseline and now I have to work on it, and they start comforting themselves. So doctor is doing physical comfort. We have taken care of other aspects like what they want to know about the disease. Everybody wants to know about the disease. If we will not give the right information, they will keep on juggling that what is happening to me. Doctor or nurses, whosoever is looking after the patient, they should have a habit of giving the right information. Once we will give the right information, this control and comfort will go together. But when control is also not possible, then definitely there is nothing to lose hope that we are going to give going to make our patient comfortable as far as possible, plus we are not going to lose his care. So these are the 4 C: cure, comfort, control, comfort and care. So comfort and care makes the major part of the palliative medicine, but definitely palliative care should start from the beginning. Means like an oncologist should know during the cure also that my patient is not only wanting treatment for the disease, but they also want to know what is going to happen, how long I will survive, what will happen to my children, whether I am going to die. So all these unanswered questions, if we will leave our patient without answering all the questions, they will go very dissatisfied. Definitely. So the concept of palliative care should start from beginning, but definitely when control is definitely more towards the control, and then it will keep increasing. So palliative care concept says that when control is not possible, we are not going to leave our patient, we are not going to desert our patient, but we will give them the as much as possible physical comfort. Physical, social, psychological or spiritual. Sometimes patient wants to know why So when you talk about patients who, you know, they can't be cured, it's detected at such a later stage that, you know, they can't be brought back. They have very less time. In such cases, are you honest with the patient? Do you tell them that you have very less time? Patient, they like the honesty. The honest doctor, I think they like the best doctors, because, you know, it is not difficult. They also understand. They also understand that yesterday I was doing everything. Now, in spite of giving chemotherapy, in spite of going for all sorts of surgery, my physical condition is declining. They are understanding everything. They just want that doctor should endorse that, yes, this is the stage of your disease. And everybody like honesty. And I think the honesty is the best policy जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, but doctors को अपनी honesty कभी भी नहीं. Whatever is happening to the patient, we should explain. It's not that today you have to explain everything. Probably when patient is ready to listen, we have to explain to them.
Dr. Gogia, a lot of them sitting here are breast cancer patients. What they have, spoken about is that they derived strength from within, or they got support from family. What is the doctor's role here? I mean, she says the doctors can make a difference. Obviously, I mean, everything is for the doctors to decide. Physical care and obviously the psychological care, as she said. एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर में सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक जो और मिथ है कि कीमोथेरेपी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे मैडम ने भी बोला। तो आजकल इतने अच्छे मेडिसिन, सपोर्टिव मेडिसिन इतनी अच्छी हैं कि वो साइड इफ़ेक्ट को बहुत कम किया जा सकता है। सपोज वॉमिटिंग सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहता है, नोशिया एंड वॉमिटिंग। बहुत सारी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं जिससे बिल्कुल भी नोशिया वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। सेकेंड, सपोर्टिव केयर, ग्रोथ फैक्टर्स हैं और बहुत सारी मेडिसिन है जिसकी कीमो के साइड इफ़ेक्ट को उससे कम किया जा सकता है। लेकिन 60 to 70% केसेस में कीमो बहुत ज़रूरी होती है। जैसे 30% केसेस में, जैसे मैडम के केस में था, खाली हार्मोन ट्रीटमेंट से ही ट्रीटमेंट हो गया, वो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, उसमें सर्वाइवल 90 to 100% रहता है, जैसे मैडम हैं अभी। तो वो डिपेंड करता है कौन सी स्टेज पे आपने कैंसर डिटेक्ट किया। सपोज स्टेज 1 और 2 में कर लिया, बहुत अच्छा सर्वाइवल है, 90% बहुत अच्छा सर्वाइवल है। आपने अगर 3 और 4 में डिटेक्ट किया, जो मेन हमारे जो पॉपुलेशन है, बीइंग ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सबसे ज़्यादा 3 और 4 में केसेस देखे जाते हैं, उतना अच्छा सर्वाइवल नहीं है। हाँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमली डिटेक्ट हो। अगर लोकली एडवांस या मेटास्टेटिक अगर डिजीज़ है भी तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है और टाइमली कंट्रोल करना चाहिए। और कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आजकल उतने नहीं रह गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट लें, और सेकंड इम्पोर्टेंट है अपने डॉक्टर से प्रॉपर कम्युनिकेशन करें रिगार्डिंग स्टेज ऑफ द डिजीज़ एंड द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द कीमोथेरेपी। वो ज़्यादा मायने रखता है रादर देन कीमो ना लें या प्रॉपरली ट्रीट ना दें या कोई और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे जाएँ। ठीक है। Dr. Khetrapal, the biggest roadblock, I think, when you're talking about cancer patients in India specifically is that they're not detected at an early stage compared to other developed countries where it's detected in the first, second stage, as he rightly pointed out. In our country, probably because early detection is, I think, the major hindrance. What steps are we taking in this regard, considering, that WHO is warning that 1 in 10 Indians will have cancer in their lifetime? Yes, if you see the complete spectrum of cancer care, it is from preventive to palliative. It is preventive, promotive, curative, rehabilitative, and palliative care. The problem in our country is that both the ends of the spectrum, the preventive and palliative, are, at the back seat. The focus is on the treatment. Yes. And diagnosis, of course, is also at the very back seat. Early diagnosis, early detection. Now, the strategy which we have evolved is that we have adopted about 50 colonies which are, underserved or unserved areas like slum areas. And we have gone to those areas and we have covered almost 32 colonies. And these are, we call it population-based screening camps. And out of 10,000 cases, people we screened last year, about 2% of them were turned positive. That is nearly 200 out of 10,000. And then we have asked them to come to the hospital for further evaluation and treatment, and we give them free treatment for such people who are detected in those slum areas. But we see that out of these 2% which were detected positive, screened positive, only 50% of the people will come to the hospital. Other 50%, they will not turn up. They will not turn up. The problem is that again, the fear, again, they don't want to, the myth is there, the fear is there. So these are the problems, the challenges which we are facing. And early detection is the key, no doubt. And our own hospital data earlier, we saw that 70% of the people who are reporting to Rajiv Gandhi Cancer Institute, they are at an advanced stage. They are reporting at an advanced stage. But because of increase in awareness and advance in technologies and modalities, we have seen that now that ratio has come down to 50%. Still, 50% of the people are coming at an advanced stage. So that is the problem. This is the problem. I mean, if you detect at an early stage, early detection, early diagnosis, early treatment, then of course the impact, that is the survival rate, will definitely increase. So this is the key actually. Because of lack of education, lack of awareness, people don't want to come out, and they think that
cancer is, something which is, why should it happen to me? And they are not willing to talk about cancer. Even if we go and conduct the camps, the outreach activities, they say, आप हमारा जनरल चेकअप नहीं करेंगे, हमें तो ब्लड शुगर, डायबिटीज, ये सारे प्रॉब्लम है. बिकॉज our focus is only on cancer. We are a stand-alone cancer hospital. But then they say कि नहीं, कैंसर तो हम लोगों को तो हो ही नहीं सकता. कैंसर ये क्या बीमारी है? हमें तो ब्लड प्रेशर हो रहा है, हमें दूसरी बीमारियां हैं, हमें डायबिटीज़ है, आप उसके लिए करिए. तो वो मोटिवेट करना, उनको आगे लाना बहुत मुश्किल इसके लिए वो बहुत मुश्किल है. सो दीस आर द चैलेंजेस वी आर फेसिंग. We have got our detection center also. So, and we have this mobile van also with the X-ray machine, mammography machine, and we go to slum areas, villages, and we screen them. But before screen them, we have to convince them, to tell them about awareness, of course, about it. And then we have seen that out of 100, 10 people are suspected of cancer, and there are 4 to 5% who actually have cancer when there are no symptoms. When we should first give them hope. Giving them hope means, okay, if you come at the pre-cancer stage, you will be cured, 100% cured. Your organ will be saved, which is a great hope for the patient. If you become late, your organ may be amputated. So that gives them hope, and that makes them come to the hospital. Secondly, we make it a point to meet each and every person who is suspected of cancer, to convince the person and make it a point that the person goes to the hospital for treatment, somewhere or the other. So some of our volunteers take this responsibility, they meet them personally. We have also made it a rule to make the sarpanch, the ASHA worker, the GRCs, and we have trained so many trainers, means training the trainer, like GRCs, like ASHA workers. In the village there are sarpanch and the principal of the school and the mohalla clinic head. We make them understand things, we give the list to them, and we see to it that because we can't reach everywhere every time. So we make it a point that those 4 or 5 people make it a point that every person in that locality is looked after, goes to the hospital and gets treatment at the earliest possible stage. Because the person herself or himself would not come forward. Someone else has to convince the person, and we can't be there all the time. Yes. So we make these 4 or 5 people, the sarpanch, the mohalla clinic head, and the ASHA worker and the GRC worker, and then we keep in touch with them whether the person has gone to the hospital, what is the treatment. And we have adopted a project in Mathura, Vrindavan, where we are working with RK Mission Hospital, and they have accepted the fact that if somebody detected with cancer in Vrindavan, Mathura, they will take the patient. Most of them free of cost, but if the person can afford, it will be on the subsidized Obviously, rate. the awareness level has to trickle down to various levels. Okay, so let me go back to the audience again. Let's talk about your medical journey so far. We've been talking about, early detection नहीं होता है या फिर later on stage में होता है तो किस तरह का care उनको मिल रहा है. एक financial factor बहुत ज़्यादा important है. I mean, a majority of you landed at the most premier institute in the country, and perhaps आपको वैसा struggle नहीं लगा होगा, but कोई आप में से ऐसा हो जिसको ऐसा रहा हो कि I've been detected with cancer, how will they cover up the financial cost? कभी किसी के साथ ऐसा रहा हो? I am Sudesh Kochar from Delhi. मेरे एम्स से ट्रीटमेंट हुआ है सारा. लोग बहुत डराते हैं, कहते हैं, कोई कहता है जी हमारा तो मकान बिक गया, कोई कहता है 20-25 लाख रुपया लग गया. तो जैसे जब मैं यहाँ जो दूर जगह से आते हैं वो आई थिंक perhaps when they exhaust all their options that's when they come to AIMS. मैं पहले फर्स्टली मैं राजीव गांधी में गई हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे एक लेडी बहुत रो रही थी. तो मैंने कहा व्हाई आर यू क्राइंग? तो कहते मेरे को कैंसर हो गया. तो मैंने कहा क्या हो गया? अगर कैंसर हो गया तो क्या हो गया? जैसे दूसरी बीमारियाँ होती हैं वैसे ही कैंसर है, तो आपका ट्रीटमेंट हो जाए. नहीं, बहुत पैसा लग जाएगा और मैं पता नहीं बचूंगी कि नहीं बचूंगी. उनके इस तरह के व्यूज़ थे. मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एम्स चले आओ, वहाँ पे चले आओ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट है, तो वहाँ पर कोई ख़ास खर्च नहीं होता. उसके बाद जैसे मेरी मीमोग्राफी थी और आफ्टर 1 ईयर जैसे मैं जाती थी मीमोग्राफी के लिए, तो भी बहुत लोग ये सवाल पूछते थे कि कितना पैसा लग जाएगा. इस तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत लोगों को थी. तो मैंने उनको बोला कुछ ऐसा पैसा नहीं लगा, हमारा मोस्ट प्रोबेबली 1 and more than 1.5 लाख के करीब खर्च हुआ है. बस इससे ज़्यादा तो कुछ खर्च होता ही नहीं है. अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके दैट आपका जर्नी थ्रू आउट कैसा रहा, हाउ लाइफ वॉज बिफोर यू वर डिटेक्टेड विद कैंसर एंड हाउ इट चेंज्ड आफ्टर यू वर डिटेक्टेड एंड आफ्टर यू वर क्योर्ड. हेलो,
मैं वसंता माधवन हूँ। मुझे जब ये डिटेक्ट हुआ है तो मुझे एकदम डॉक्टर मेरे से कह रहे थे, तब मुझे ऐसा हुआ कि मैं बहुत रोई तब। बस उसी दिन मैं रोई, फिर उसके बाद कभी मुझे रोना नहीं आया। मुझे मेरे में इतना हिम्मत था कि मुझे मालूम हो कि ये तो क्यूरेबल है, कैसे भी मैं मरूंगी नहीं। लेकिन मुझे इस बात पे डर था कि मैं कैसे लोगों का सामना करूं, यही मुझे डर था। लेकिन इधर मैं केरला वाली हूँ, तो इधर मेरा दिल्ली में जो फ्रेंड्स है वो सर्कल में तो सबको मालूम है, लेकिन वो डर नहीं था किसी को मालूम होने दो या कुछ भी नहीं था। मैं केरला जाके मैं सबको कैसे फेस करूँगी, यही मेरा डर था। लेकिन अभी तक मेरा घर वालों को तो पता है, लेकिन बाकी जो मोहल्ले वाले सब लोग ऐसे आके बोलेंगे कि इनका सिंपैथी जो है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपको वीक करता है, वो लोगों की सिंपैथी जो मिलती है। तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, मैं जीऊँगी, मुझे आगे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये लोगों का बातें सुन के मुझे ऐसा हो जाएगा। अभी तक कोई मेरे से ऐसा बात नहीं किया है, किसी को इतना पता भी नहीं है। शायद पता होगा, मेरे से डायरेक्ट नहीं पूछा है। अच्छा, अच्छी बात है, ये तो यही मैं सोचती हूँ। लेकिन अभी मेरा तो 5-6 इयर्स हो गया, तो अभी मुझे ये बात पे डर है, भाई दुख है कि मेरा साइड इफेक्ट हो गया कि लिम्फोडीमा हो गया है। तो मुझे साड़ी पहनने में भी दिक्कत होता है। अभी अच्छा है कि ठंडी का विंटर में तो स्वेटर पहन के घूम सकती हूँ, लेकिन केरला में जाओ शादी में या कहीं भी अटेंड करो, मैं इतना मुश्किल से छुपा के चलती थी। कई लोग आके एकदम आके हाथ पकड़ के क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैं तो उनसे बच के मैं जाती थी क्योंकि सबका जवाब देना बहुत मुश्किल है। यही मेरा प्रॉब्लम था। ठीक है, यू वांट टू ऐड समथिंग? डॉक्टर मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो मेरी जैसे लिम्फोडिमा हो गया है तो बाजू पे ना बहुत ब्लैकनेस आ गई है, तो उसका क्या क्योर है, क्या लगाना चाहिए? एक्चुअली लिम्फेडिमा जो एक प्रॉब्लम जो है वो सबसे बेस्ट तो रहता है कि हम उसको प्रिवेंट करें, बट अगर एक बार हो जाए तो हमें उसको स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है। सो कोई सी भी लोशन लगा के वी कैन उसको ड्राई नहीं होने दें। मेरे कोई ऐसा स्पेसिफिक लोशन नहीं बताती, बट आई थिंक एनी निविया क्रीम और लैक्टोक्लेमिन प्रिवेंशन जो है उसका प्रिवेंशन है। जिस समय सर्जरी होती है उसके बाद जैसे हमारे हर पेशेंट को हम एक्सरसाइज सिखाते हैं। बेसिकली लिम्फेडिमा क्या होता है, लिम्फेटिक ब्लॉक हो जाता है, तो हम उनको लिम्फेटिक ड्रेनेज की एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो वो अगर वो करते रहते हैं तो हमारे यहाँ पे वो रेगुलर फीचर है। हमारे जो पैलेटिव केयर ओपीडी है उसके सामने एक फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा बैठी रहती है। सो जैसे ही हमारे यहाँ बहुत क्लोज इंटीग्रेशन है ऑन्कोलॉजिस्ट का और पैलेटिव है। सो जैसे ही ऑन्कोलॉजिस्ट को लगता है कि दिस पेशेंट को इसको नहीं समझाया गया, वो हमारे पास भेजते हैं और हम उनको वहाँ भेज देते हैं। तो वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट उनको लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सरसाइज सिखाते हैं। वो पूरे टाइम बैठे रहते हैं, जितनी देर ओपीडी चलता है उतनी देर वो भी चलता है। तो वो लिम्फेटिक ड्रेनेज एक्सरसाइज सिखाने से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बट एक बार आ गया उसके बाद हमको केयर करनी पड़ती है उसकी। Lymphedema, actually 60% of the patients after the breast surgery they develop lymphedema। तो इसमें मतलब प्रिवेंशन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि सर्जरी के टाइम पे यू आर टचिंग द लिम्फ नोड्स। तो जैसे मैडम ने कहा कि लिम्फेटिक ब्लॉकेज की वजह से तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जब हो जाता है तो अर्ली स्टेज पे ही लिम्फेडिमा, अगर आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा वेरी वेल डेवलप्ड फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट वी हैव, जो एक लिम्फा प्रेस करके एक मशीन आती है जिससे हम लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं और एक्सरसाइजेस करवाते हैं। उसके रिजल्ट्स भी बहुत बेटर है। हम उसके जो इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट थेरेपी वो मॉनिटर करते हैं, गर्थ मेजर करते हैं, एंड वी सी दैट काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है उसमें। तो आप अगर हमारे यहाँ अगर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कभी विजिट कर लीजिए, एक बार पहले डॉक्टर को दिखा दीजिए, तो एटलीस्ट वी कैन सी इफ वी कैन डू व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर यू। Perhaps a visit to the doctor can help solve your problem. Yeah, please. मैं इंडियन कैंसर सोसाइटी से हूँ। मैं 2 दिन एम्स जाती हूँ, वॉलंटियर हूँ, और 2 दिन एम्स जाती हूँ, और वहाँ पे जो ये जो सर्वाइवर्स होते हैं उनको मैं एक्सरसाइज सिखाती हूँ और बोलती हूँ कि डेली
दिन में 3 बार कम से कम एक्सरसाइज करनी है। मेरे हाथ पे कोई सूजन नहीं वो देखिए सोल्यूशन आपके बगल में बैठा है। ठीक है, इन द फ्रंट रो मैम, शी वांटेड टू से समथिंग। आप? मैं मुरादाबाद से आई हूँ, अंजू अग्रवाल। मैंने मुरादाबाद में सारे टेस्ट करा लिए थे, बिल्कुल सही थे। वो बोले आपको कुछ नहीं है, आपका सिंपल सर्जरी होएगा। फिर मेरी कज़न थी जीवन ज्योति हॉस्पिटल में दिल्ली में, तो मैंने एक बार उनको कंसर्न किया तो उन्होंने बोला कि मुझे शक है कि आपको कैंसर हो सकता है। मैंने फिर एम्स में, कहती है आप 4 हॉस्पिटल बताए उसमें से चूज़ कर लो, तो मैंने एम्स चूज़ किया। मैं एम्स में गई, वहाँ पे मेरे को बायोप्सी हुई तो उन्होंने लिखा कि नो एविडेंस ऑफ मैलिग्नेंसी। दोबारा हुई, 3 बार हुई, उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं है, आपका सिंपल बिनाइन हाइब्रिड गांठ है, आप उसका ऑपरेशन करा लो। जब डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन किया तो सिंपल सर्जरी में, तो उसके बाद जो मेरा उसमें से पीस निकला तो उसमें से उनको लगा कि उसके अंदर कोई कैविटी है, तो उन्होंने बोला कि आपको कैंसर है। तो मैं एकदम से मतलब पूरी फैमिली पूरी सरप्राइज़ हो गई कि अभी तक मतलब किसी ने भी, इतने डॉक्टर्स को दिखाया, किसी ने भी कैंसर नहीं बोला था। ये वर्ड कैसे आ गया कैंसर का? और मैं भी रो पड़ी। वो बोले कि आपको कीमोथेरेपी होएगा। तो फिर वो जो मेरे लेबॉर्ट्री के डॉक्टर थे उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला कि मेरी गलती हो गई है लेकिन आपको कैंसर है, और आपका कैंसर भी बहुत अग्रेसिव वाला है, TNBC ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है, उसका सिर्फ कीमो ही होता है। तो आपको कीमो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बेस्ट डॉक्टर बता देता हूँ, डॉक्टर अजय गोगिया। उन्होंने मुझे उनके पास भेजा, कहते हैं आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बस आप कीमो करा लो। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गई, मेरा कीमो हुआ, उसके बाद रेडियो हुआ, आज मैं आपके सामने हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे बिल्कुल मतलब घर में सबको बहुत था, अभी तक विश्वास नहीं करते। मेरे मायके में मेरे ब्रदर वगैरह वो कहते हैं नहीं देखो कुछ नहीं था, तू फंस गई। देखिए डॉक्टर भटनागर ने कहा ना, डॉक्टर इज द वन हु मेक्स द डिफरेंस, ही हैज मेड द बिगेस्ट डिफरेंस इन योर मैं लाइफ। आज बहुत खुश थी कि डॉक्टर साहब सामने हैं। और मैम जब मैं अपनी कीमो के बाद मेरे बाल नहीं थे तो मैं ऊपर कैप पहनती थी, तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी पिक्चर देखने जाते हैं। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी। वो बोला नहीं हम सब पूरी फैमिली कैप पहनेंगे, ग्रुप बन के जाएंगे। तो सब कैप पहन के गए, ये बहुत बड़ा मूवमेंट था मेरे लिए। कहते कि हम एक जैसे जाएंगे कि आपको कोई फील नहीं होगा कि मैं ऐसी हूँ, हम सब आपकी तरह हैं। तो सब ने कैप पहन के हम मुरादाबाद में फेम सिनेमा में पिक्चर देखने गए, वो मेरे लिए बहुत वो था। Actually, listening to your stories, I shouldn't be referring to you as cancer survivors. I should be calling you and your family as cancer warriors. Yes, ma'am. You know, effectively battled it out so well, and today you are here as an inspiration to hundreds of all of us. Dr. Gogia, I want to come to you with a question that जो बहुत ही एक layman के दिमाग में आएगा. Breast cancer, most common type of cancer. We've heard how it happens, what are the causes behind it. But what is the best way to prevent it in the first place? मुझे ब्रेस्ट कैंसर ना हो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह की लाइफस्टाइल मुझे जीनी चाहिए? मैम डेफिनेटली हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको 1 आवर एटलीस्ट हाफ एन आवर मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, अल्कोहल और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आपके फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको उनका जेनेटिक टेस्ट कराना चाहिए और फिर स्क्रीनिंग उसी के हिसाब से करानी चाहिए। बट इसमें भी कई बार होता है कि मोस्टली जो कैंसर होते हैं वो आनुवंशिक या हेरिडिटरी नहीं होते हैं, बट जो आप प्रिवेंटेबल स्टेप्स हैं खाली डाइट एक्सरसाइज इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जंक फूड बिल्कुल ही बैन कर रहे हैं, लेकिन जंक फूड इतना इजीली अवेलेबल है, एडोलेसेंट्स, अब उनको कैसे आप मना करेंगे? सो डॉक्टर क्षेत्रपाल, मैं शुरू में कह रही थी, आई विल ब्रिंग दैट क्वेश्चन टू यू। A huge concern today is we are talking about men and women suffering from cancer. There are adolescents who are reporting cancer these days. उनको क्यों हो रहा है? लाइफस्टाइल आजकल आप देख सकते हैं But even for 5-year, 6-year-old children. हाँ, बच्चों में तो डिफरेंट वो जो मेनली जो ब्लड कैंसर्स है, जो हेमाटोलॉजी के जो होते हैं, जो मेनली द लिम्फोमास, ल्यूकीमियाज एंड व्हाट यू कॉल दैट, क्या बोलते हैं आप, सार्कोमास, जो उसके होते हैं, जो बोन के कैंसर होते हैं, ट्यूमर्स। तो ये तो अलग तरह के कैंसर्स होते हैं, वो उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं होते हैं इतने। कुछ कैंसर एज रिलेटेड होते हैं, एज रिलेटेड, यस। सो एक्यूट ल्यूकीमिया वो बच्चों में ही पाया जाता है। सार्कोमा जो इविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा 10 से 25 साल के बीच में यंग एडल्ट्स में, तो उनका तो कोई एक्सपोजर नहीं है ना, उनको कोई जेनेटिक्स है, बट वो पाया जाता है क्योंकि वो एज रिलेटेड इंसिडेंट्स होते हैं कैंसर के कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप में। I'll take one final comment from there. Ma'am, you haven't spoken at all. Tell us about your journey before and after cancer. मैं 35 साल की थी जब एकदम से अचानक से ही मुझे पता चला। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ क्योंकि मेरे को कोई दर्द नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई मैं बीमार नहीं रहती थी, बिल्कुल नॉर्मल ठीक ठाक। बच्चे मेरे छोटे थे उस टाइम। सडनली बस हस्बैंड मेडिकल लाइन में ही थे तो एकदम से लगा कि कुछ है हल्का सा,
फ़ौरन उसी दिन ही जाके हमने डॉक्टर को दिखाया तो टेस्ट हो गए, एक दिन में रिपोर्ट आ गई, FNAC हो गई। तो मुझे लगा कि नहीं, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है। पहला मेरा यही था कि ये मेरी नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, कभी भी ऐसा कुछ आया ही नहीं मेरे आगे। तो फिर लगा कि नहीं, हस्बैंड बहुत परेशान, घर के सब लोग बहुत परेशान, और मैं लिटरली एक टाइम ऐसा आया कि मैं बहुत हंसी उन सबको देखकर कि ये सब लोग, मुझे लगा कि शायद मैं मतलब ठीक हूँ और ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे ट्रीटमेंट, अगले दिन से हमने जाना शुरू किया, डॉक्टर देखे, इधर जाएं उधर जाएं, मेरा 3-4 जगह दिखाया। फिर फाइनली हम दिल्ली आ गए। फिर दिल्ली आके मैंने एम्स में अपना दिखाया। फिर उसके बाद मेरा शुरू हो गया, जो जो रिपोर्ट्स आती रही मुझे लगता रहा नहीं नहीं, मैं अपने हस्बैंड को हर बार ये कहती थी कि नहीं, ये मेरी नहीं है, और वो हंसते थे कि तेरी नहीं है, अच्छा चल ठीक है, तेरी नहीं है तो मेरी है। वो मुझे ये कह देते थे कि चलो ठीक है, तेरी नहीं है मेरी है, चल अब तू मेरे साथ चल। कराया, सब कुछ कराया। तो डर था थोड़ा सा बहुत। स्टार्टेड वैल्यूइंग योरसेल्फ अ लॉट मोर। बच्चे बहुत छोटे थे ना, तो इसलिए बहुत डर गई थी। I think because हम सब में से ऐसा होता है, we take our lives for granted. Perhaps that's why he says when he mentions lifestyle, this is. लेकिन ये था कि मैं आ गई, मेरी जॉइंट फैमिली में मैं हूँ, बच्चे वहीं छोड़ के आ गई यहाँ पर, यहाँ सब कुछ कराया। उसके बाद जब मैं गई, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत कीमो वीमो सब होती थी, डेली जाती थी आती थी। लगता था कि हाँ, जब पता होता था कि कोई ऐसा है बंदा जिसको नहीं मैंने फेस करना, जिसने मुझे नेगेटिव फीलिंग देनी है। मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी थी, वो मुझे पहले ही अंदर कर देती थी कि सीमा सो रही है, आप मेरे से बात करो, उसको मिलने आए हो, हाँ, बाहर निकाल बहुत दिया। अच्छा रहा मेरे लिए। मतलब मुझे वो बिल्कुल मुश्किल नहीं आई। मेरे बच्चों ने मेरा इतना साथ दिया, उन्हें लगता था कि मम्मी को थोड़ा सा ब्यूटी का होता है। मेरे बच्चों ने मेरे घर के सारे शीशे के ऊपर कवर कर दिए थे कि हम नहीं देखेंगे तो मम्मी भी नहीं देखेंगी। वो टाइम मेरा बहुत, मतलब मैं आज भी याद करती हूँ ना, तो मतलब मुझे लगता है कि छोटी बेटी मेरी उस टाइम 8th-9th में थी, बेटा और छोटा था, बहुत लगता था। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा रहा। आज के टाइम में अब ये लगता है कि मेरे मोहल्ले में अगर वहाँ पर मेरठ में किसी को अगर 1-2 लोगों को दिक्कत आई, सबसे पहले वो लोग मेरे पास आए। उन लोगों को फिर जब मैं बताती हूँ तो मुझे मेरे घर वाले ऐसे देखते हैं कि ये कितनी हिम्मत उनको अब दे रही है। क्योंकि सब लोग ना ये देख के सबको ये लगता है कि ये अगर ठीक है तो हम भी ठीक हो जाएंगे। ये फीलिंग अपने आप उस पेशेंट को उस टाइम तो आती है। देखिए, बाकी बॉडी सबकी अपनी अपनी अलग होती है। आप लोग सब बहुत ही करेजियस लेडीज हैं, आपकी फैमिली ने भी आपका बहुत सपोर्ट किया है। जो बाकी कैंसर पेशेंट्स हैं जिनके पास उतना सपोर्ट नहीं है फैमिली का या सोशल सोसाइटी का, या उतना करेज वो अपने आप में भी नहीं निकाल पाती है, उनके लिए कुछ एडवाइस अगर आप देना चाहते हो तो। हम लोग भी बहुत बारी कोशिश करते हैं कि हम लोग डे केयर सेंटर्स में भी जाके पेशेंट्स को मोटिवेट करें। मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से वी आर अलॉटेड ड्यूटीज टू गो एंड मीट दीज पेशेंट्स एंड हेल्प देम आउट इन वॉट एवर पॉसिबल वे दैट वी कैन। बाकी आवर ओन फैमिली हेल्प्स अस मेंटली, फिजिकली, psychologically, and that is what we have come out of it. Now that we are survivors ourselves, I think we can motivate a lot of people. Definitely, hundreds, thousands. हम लोगों के कहने में भी काफी दम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, कि हम अगर जिंदा हैं तो बाकी भी सब जिंदा ही रहेंगे। ठीक है, Dr. Ketpal, I'll take one concluding remark from you. So before we wrap up the program, help us understand, or if you could share with our viewers, what are the steps that need to be taken to prevent new cancer cases in the country specifically? Yes, if you see the slogan of World Health Day, which was decided in 2019, it is a 3 years slogan covering all the 3 years, that I am and I will. Yes. So I think the main focus is on that everybody in this country, should involve in contributing towards prevention of cancer, creating awareness, educating people, and disseminating the information about cancer. I think this should be the key. And if all of us take action for preventing cancer, the involvement of all the stakeholders, as she rightly mentioned, the community, the NGOs, the businesses, everybody should be involved. I think as you see that our own hospital, we have about 700 patients in OPD every day, but out of which about 50 patients are new patients every day. So we see about 1,500 new patients every day. And every year about, I think more than 1.1 million or so new patients are detected, new
cancer cases are detected every year in the country. And if we all come together and in a common platform with a common thinking and give this message to everybody, in my area, to my neighbors, to my relatives and people around, that cancer, there are certain preventable cancers, which should be detected at an early stage, and we should try to take all precautions to prevent cancer. I think with this, we can actually, decrease the number of cancer cases. Like WHO has said that 1 in 10 Indians will be, suffering from cancer in next 20 years. And out of this, about 1 in 15 who are detected positive will die. So 30% of the cancers, actually more than 30% I should say, are preventable. So with this message, I think I would like to give to all those who are present here, the young and beautiful ladies, survivors sitting here. Yes. And they are the best people. They are, the survivors and the peer counselors, I should say. So if we involve such people, like we also have the volunteers, the survivors coming, to our place, Rajiv Gandhi, and counseling people, going around, meeting them and giving them very positive vibes, positive information. So I think we need to spread awareness through all. Dr. Gogia, you want to add a word of advice as well? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, कीमोथेरेपी में बहुत ज़्यादा एडवांसेस हैं, ऐसे सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा एडवांसेस हैं. पहले पूरी ब्रेस्ट रिमूव हो जाती थी, आजकल ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी है. उसकी वजह से जो लिम्फ एडिनोमा की जो परसेंटेज है, जो कॉम्प्लिकेशन रेट है, वो बहुत कम है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द सर्जरी, रेडिएशन में बहुत सारी टेक्निक्स इवॉल्व हुई हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन की जो साइड इफ़ेक्ट कम है. कीमोथेरेपी की सपोर्टिव केयर में बहुत सारी जो एडवांसेस हैं, उसकी वजह से भी कम है. और जो रेस्ट, अगर किसी भी स्टेज में आप डिटेक्ट कर लेंगे कैंसर, स्टेज 1, 2 में तो क्योर है, स्टेज 3, 4 में भी अगर सपोज क्योर नहीं होता है, तो पैलेशन में, जैसे डॉक्टर सुषमा ने कहा, बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स हैं जिससे बेस्ट पैलिएटिव केयर कर सकते हैं. और रिगार्डिंग फाइनेंसेस, नॉट ए राइट नाउ इज नॉट ए बिग डील बिकॉज ऑफ द इतनी सारी स्कीम्स हैं. और अगर कुछ बहुत ज़्यादा मदद होती है तो हम रेखा जी से भी हेल्प ले लेते हैं. और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से लोगों को स्कीम्स के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली. और अभी आजकल टारगेट थेरेपी आ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा सर्वाइवल आउटकम हो सकता है. ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी आ गए हैं, उसकी वजह से भी सर्वाइवल इंप्रूव है. और हार्मोन पॉजिटिव जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसमें बहुत सारे नए मॉलिक्यूल आ गए हैं. तो ओवरऑल हर स्टेप में बहुत सारे एडवांसेस हुई हैं पर्टेनिंग टू ब्रेस्ट कैंसर, और उससे सर्वाइवल बहुत अच्छा हो रहा है, डेफिनेटली. यस, ठीक है. मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी. एनवायरनमेंट इज अनदर फैक्टर which is affecting especially the youngsters. People who are working in the area where certain kinds of fumes of chemicals are there, we make people get into the gutters without any precautions. So, which are very dangerous, So, we should take care of the people who are working in such, and people who are working tobacco factories, even if they are not smoking, they are all the time in that fume. They're exposed to it. So, they are exposed to it. And pollution, of course, other environments are also there. So, we should take care that people who are working in such dangerous chemical situations, they should be given precaution and protections with them. And environment also means your mental environment. If you are all the time tense and all the time you are worried about certain things, you should be having positive thinking also, So that is also very important. And then another environment is environment at your home and your office. If all the time you are being nagged at home or nagged at the office working, then you can't remain happy. A very stressful and sedentary lifestyle is something obviously. So all this environment from every aspect should also be improved to help people. Thank you. So multiple challenges there. Our panelists have pointed out, members in the audience have said, but obviously collectively, if all of us put forward our best and work towards this great cause, there will be, some cases which can be prevented. And if not, what's required of us is to give them the care that they deserve. So thank you to all our panelists for joining us on this edition of The Pulse and putting forth